पैशन जो है वो क्रिएट किया जाता है, पैशन होता नहीं है। भाई लाइक हो सकती है बट पैशन को क्रिएट करते हैं। पैशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए फिर बड़ी चीजें ओवरकम करनी पड़ती हैं, बहुत चीजों को स्टडी भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फ्यूचर भी देखते हैं, बहुत कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें मिल मिला के एक पैशन क्रिएट होता है। जब वो पैशन क्रिएट हो जाता है तो देन फिर तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, फिर आपको अपना स्टेप्स जो है नजर आने लग जाते हैं अपने आप। तो वो मैंने अपना क्रिएट किया पैशन को इसके अंदर कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, तो आ गया। फिर मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई किसी भी किस्म की। कि ओरिजिनलिटी ऑफ द फूड इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ओरिजिन ऑफ द कुक एंड ओरिजिन ऑफ द कुजीन इज सेम। अदरवाइज ओरिजिनलिटी नहीं आ सकती। Working on vegetarian food, realize that nothing called pure vegetarian, it has no meaning. Food has to be honestly vegetarian. It has to be ethical. Pure means what? Means nothing. So that's the seriousness about food. That's when you eat concept, even in Damp of the Bukhara, when we worked on this, you work in very fine details. हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज हमारे शो पर हैं डॉक्टर शेफ मंजीत गिल। डॉक्टर शेफ मंजीत गिल सर इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड, अप्रिशिएटेड एंड द इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। एंड उनकी जो अचीवमेंट्स है वो शायद एक दिन में बयान भी नहीं हो सकती। कोई ऐसी एसोसिएशन, फोरम या इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने उनको सम्मानित ना करा हो किसी ऐसे अवार्ड से या फेलिसिटेशन से। आज उनके साथ हमें बात करने का मौका मिला और हम इस इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे उनका खाने की तरफ रुझान हुआ और क्या उन्होंने इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हासिल करवाया है। एंड टुडे आल्सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लीडर्स इन द इंडस्ट्री। एक लीडर हमेशा ये सोचते हैं कि वो अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को कैसे गिव बैक करें। एंड विद दिस टर्म्स ही हैज स्टार्टेड मेनी movements and many associations, and he worked very closely to give back to the people. Stay tuned to this amazing episode and conversation to indulge with none other than Dr. Chef Manjit Gill sir with us. Very warm welcome to the show, sir. And I extend a very heartfelt gratitude to you for your time today. And how are you feeling today, sir? I'm absolutely fine and thank you very much, Rishabh. My pleasure to have a conversation with you very candidly today. So, being in the industry for close to about happening to be 50 years now, how has this journey been to you, and lots of learning experiences you might have had? तो ये जो 50 सालों का जो सफर है आपका, ये कैसे शुरू हुआ और इसकी जो लेसन्स हैं जो आपने इम्बाइब करे और जो आज आप वर्ल्ड को गिव बैक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सर। ऐसा है कि 50 साल पहले मेरी जर्नी डेफिनेटली शुरू हुई, पर कॉलेज तो खैर ज्वाइन किया था, 53 इयर्स हो गए जब 71 में ज्वाइन किया था। बट कोई मेरी ऐसी कोई स्टोरीज नहीं है, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है कि चाइल्डहुड में मैं कोई कुकिंग करता था या कुकिंग का शौक था या कोई ऐसा कुछ नहीं था। नो रोल मॉडल, नथिंग। पर ये था कि मैं कुछ इंटरेस्ट जो थे वो मोस्टली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा था। स्पोर्ट्स में अच्छा होता था, मैं स्केचिंग, ड्राइंग वगैरह भी करता था। मॉड्यूल साइंस स्टूडेंट था तो साइंस मॉड्यूल बहुत बनाता था, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करता था। तो इस टाइप की चीज़ें में मेरा शौक रहा है शुरू से, बचपन से। खाने का डेफिनेटली कोई ऐसा कोई स्टोरी नहीं है मेरे बच्चों ने बनाया या कभी किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये था कि घर में खाने पे बातचीत होती थी, टॉपिक होता था, बट ऐसा नहीं था कभी कोई सीख रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें रिलेट कर पाता हूँ एक्सपीरियंस के साथ कि उस टाइम भी घर में इस तरह की बातें होती थी और कई लेसन्स हैं जिनको मैं रिलेट कर पाता हूँ अब, तो उस टाइम नहीं पता था काफ़ी। तो मेरे तो फादर ने एडवाइस किया था कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो कि होटल मैनेजमेंट इज ए न्यू कैरियर आ रहा। उन्होंने कहीं पढ़े थे, आर्टिकल्स वगैरह काफ़ी पढ़ते थे वो, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक अच्छा प्रोफेशन
मतलब आगे जॉब के लिए भी ओरिएंटेशन बेटर रहेगा, आप कंसिडर करो इसको। तो मैंने भी सिर्फ इतना ज़्यादा तो पता नहीं था, कुछ ऐसी जान पहचान भी नहीं थी कि किसी ने किया हो तो बताओ। तो ऐसे ही कि फ्यूचर के लिए अच्छा है तो ट्राई कर लेते हैं। तो एडमिशन हो गई पूसा में उस टाइम। तो और हमारे टाइम पे ये होता था सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता था, अच्छा, ये क्राइटेरिया था क्राइटेरिया एडमिशन का। था। तो हमारे टाइम के जितने भी मिलेंगे आपको सब साइंस स्टूडेंट ही मिलेंगे। वाओ। तो साइंस स्टूडेंट ही तो उसमें एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे पाता था। तो एडमिशन हो गई। तो वहाँ पे इंटरेस्ट पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई शुरू शुरू में कि अब ये नहीं मालूम था कि कुकरी जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट होगा, नंबर ऑफ आवर्स थ्रू आउट दी 3 years मैक्सिमम होते हैं। तो उसके प्रैक्टिकल्स में मेरे को पहले दिन ही कुछ प्रॉब्लम्स हुई। प्रॉब्लम्स मेरी ये थी कि मैं सिंस बर्थ वेजिटेरियन, अब भी वेजिटेरियन हूँ। तो मैं मील्स कभी मेरे नॉनवेज नहीं होते थ्रू आउट माई लाइफ, एनी वेयर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेस्टिंग में सब कर लेता हूँ अब। तो उस टाइम इवन के एग को तोड़ना, बीट करना भी एक प्रॉब्लम थी, चैलेंज था। मैंने कभी देखा नहीं था, किया नहीं था कभी। तो वो कुछ मुश्किल हुआ शुरू में। इवन कि मैंने अपने टीचर को बोला भी, आई स्टिल हैव रिलेशनशिप विद दैट टीचर, गुड फ्रेंड नाउ, मिस्टर लोटिया। तो उनको मैंने बोला मेरे से नहीं हो सकता। तो कहता देन यू हैव टू लीव दिस कोर्स इफ यू कांट डू इट। तो वो एटीट्यूड नहीं था मेरे में शुरू से ही कि कोई चैलेंज लिया है या कुछ करना है तो उसको अचीव करना है, किसी यू हैव टू फाइंड द वेज टू डू इट। तो वो मैंने उसको फिर स्लोली स्लोली ओवरकम किया उस चीज़ को, और खाया नहीं कभी, लेकिन वो जो थोड़ा ही बहुत फीलिंग ऐसी थी वो ओवरकम करके फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ड्यूरिंग माई होटल मैनेजमेंट ओनली, मेरी थोड़ी इंटर्नशिप जो होटल्स में होती थी समर वेकेशन में, तो फर्स्ट ईयर ओनली आई डिसाइडेड कि मैं बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर मी इन द होटल suits me the kitchen only. Okay. My bringing up, my the personality, my look, whatever, or my own nature is more suits to the kitchen than any other department. So I chosen the kitchen. I decided I will join kitchen only, and I did my efforts also for that. And I was lucky enough that I selected with the overalls as kitchen management training in 74. So my journey started from there. Then it was never look back. उन दिनों जो चैलेंजेस होते थे आज के टाइम से हो सकता है काफी अलग हो। आज हमारे सामने रोल मॉडल्स होते हैं, इतने सारे बुक्स हैं, मीडिया है, रिसर्च वर्क जो लोगों ने करा है, यू आर इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ। सो उन दिनों आपका कोई जैसे रोल मॉडल किसी को कह देते हैं हम लोग, तो उन दिनों आप किसको मतलब देखते थे या फॉलो करते थे, कैसी स्टडीज या फिर ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था, ऐसी कोई स्टडी नहीं थी, कोई रिलेशनशिप में भी ऐसे नहीं था, कोई रिलेशंस में कोई होटल्स में भी हो। तो मैं तो फर्स्ट वन था टू गेट इनटू द होटल कैरियर। तो ऐसा कुछ नहीं था वो। तो आई थिंक अगर आपने डिसाइड कर लिया है किसी, देखो मैं ये भी नहीं मानता कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा पैशन था टू बिकम ए शेफ या कुक। आई डोंट बिलीव दिस। पैशन जो है वो क्रिएट किया जाता है, पैशन होता नहीं है। वही लाइक हो सकती है, बट पैशन को क्रिएट करते हैं। पैशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी बड़ी चीज़ें ओवरकम करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ों को स्टडी भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फ्यूचर भी देखते हैं, बहुत कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिल मिला के एक पैशन क्रिएट होता है। जब वो पैशन क्रिएट हो जाता है तो देन फिर तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। फिर आपको अपना स्टेप्स जो है नजर आने लग जाते हैं अपने आप। तो वो मैंने अपना क्रिएट किया पैशन को इसके अंदर कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, तो आ गया। फिर मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई किसी भी किस्म की। आपका जो रुझान रहा है, जो आपका इंक्लिनेशन रहा है टुवर्ड्स इंडियन फूड, नहीं, ये गलत बात है। मैं को कई लोग समझते हैं कि शायद मैं वेस्टर्न फूड को समझता ही नहीं हूँ। ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए, मतलब हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं वेस्टर्न फूड को समझता ही नहीं हूँ जहाँ। तो मैं ये भी नहीं कहता कि मैं वन ऑफ द बेस्ट हूँ, बट आई नो वेरी वेल। क्योंकि इनिशियल ट्रेनिंग हमारे टाइम पे जो ट्रेनिंग होती थी या जो समझाया भी जाता था वो यही था कि अगर किचन को एडमिनिस्ट्रेटिवली समझना है,
स्ट्रक्चरली उसको समझना है, मैनेजमेंट समझनी है, तो वो उस टाइम सिर्फ वेस्टर्न फूड से ही होती थी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट्स इन द किचन, जो स्ट्रक्चर है किचन मैनेजमेंट का, वो वेस्टर्न फूड से होता था। इंडियन फूड एक वन ऑफ द किचन होती थी। ओके। जैसे कोल्ड किचन, गाट मांझी हो, कोल्ड किचन है, एक हॉट किचन है, पेंट्री है, बुचर शॉप है, ये है, तो किचन, एक इंडियन किचन वन ऑफ द डिपार्टमेंट होता था। तो ओवरऑल समझने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द वेस्टर्न। तो हमारी ट्रेनिंग भी टोटल वेस्टर्न फूड में ही रही जी। ओबराइज में हम टोटल वेस्टर्न फूड में होती थी, वेस्टर्न टीचर होते थे, शेफ भी वेस्टर्न होते थे, जर्मन या ऑस्ट्रियन भी लोग होते थे। तो ट्रेनिंग जो है कंप्लीट उसी में हुई। उसके बाद मैं शेफ भी बना, तो वेस्टर्न फूड में ही था। उसके बाद मैंने ITC बौरे भी ज्वाइन किया, तो तक्षला का शेफ था। तक्षला उस टाइम मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट था, उसी का शेफ था मैं। इंडियन फूड में तो मैं जब, पर वहां से बड़ी जल्दी ही मैं, मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी टू किचन को मैनेज करने के लिए, ड्यू टू सम रीजंस, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गो इनटू रीजंस। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने फिर जब किचन में हेड करना शुरू किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो देन मेरा थोड़ा बहुत, उससे पहले ही मैं अपने बिलीव करता था अपने सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर। तो विद ऑल सर्कमस्टांसेस जिस टाइम भी थे उस टाइम पे, तो मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गया था इन 77 में टू डू दिस समर वेकेशन कोर्सेज। तो वहाँ से मैंने 3 कोर्सेज किए थे, फूड, कमर्शियल फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज कंट्रोल एंड एडवांस फूड प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो वहाँ जब मैं गया था, तो वहाँ मेरे को जाके, बिकॉज ग्लोबल स्टूडेंट्स की इन्वायरमेंट था वहाँ पे, तो बड़े प्रोफेशनल्स के साथ भी मुलाकात हुई। मैं बहुत यंग था अभी, बड़ी जल्दी मैं चला गया था कॉर्नेल, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है वैसे, पर लेकिन वहाँ जाके समझ आई कि मेरे से कोई पूछता था तो मैं कहता था मैं आई नो वेस्टर्न फूड, इंडियन फूड मेरे को आता नहीं है। तो पीपल यूज्ड टू लाफ ऑन दिस, अच्छा, दैट वेयर यू लर्न वेस्टर्न फूड। दैट टाइम हम वेस्टर्न भी बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे मोस्टली, कॉन्टिनेंटल फ्रेंच फूड पे। तो द क्वेश्चन यूज्ड टू हैपन, यू नो फ्रेंच, you know, a little bit, whatever, you know. Have you ever lived France? From where you learned? You know, if you have cuisine को अगर तुमने उस कल्चर ही नहीं समझा, उस कल्चर में कभी गए ही नहीं, तो cuisine तो few recipes पता है आपको सिर्फ. You don't know the cuisine. Few recipes पता है सिर्फ आपको. आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी उसको समझने के लिए और फ्रेंच से बेटर शेफ बनने के लिए. You can never become. तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि बीइंग एन इंडियन आई मस्ट नो माई इंडियन फूड. अगर मुझे इंडियन फूड नहीं आता है तो आई एम नो गुड कुक. फ्रेंच या अदर इटालियन फूड में सीख सकता हूँ, बट मेरा बेसिक जो है वो इंडियन फूड ही होना चाहिए. तो वो रियलाइजेशन के बाद मैंने इंडियन फूड को पढ़ना भी शुरू किया, समझने की भी कोशिश की. तो मैं फिर एक लाइन भी मैंने पढ़ी किसी कल्चरल मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर कि ओरिजिनलिटी ऑफ द फूड इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ओरिजिन ऑफ द कुक एंड ओरिजिन ऑफ द कुजीन इज सेम. अदरवाइज ओरिजिनलिटी नहीं आ सकती, रियल फूड नहीं बन सकता है. सिमिलर फूड बना लोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और ये हम हिंदुस्तानियों को ये चीज बड़ी अच्छी समझ आ जाती है, बड़ी जल्दी समझ आती है, बिकॉज हमारा बहुत डाइवर्स फूड है जी, और डाइवर्स ही शेफ्स हैं. एग्जैक्टली. इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, उनके अपने डाइवर्सिफाइड क्यूजीन्स हैं, सब शेफ्स हैं. बिल्कुल. तो उनकी शेफ्स हैं, वो लोग ही बेस्ट खाना बना सकते हैं, बिकॉज वो वहां से बिलोंग करते हैं उस कल्चर में. उस दैट इज वहां अब कल्चर आता है, अब ट्रेडिशंस आती है जी. आप काम सीख सकते हो, पर आप ओरिजिनलिटी नहीं ला सकते जो वो जो लेके आते हैं. इस हर रेसिपी में बड़ा लूज लिखा रहता है, जस्ट सीजनिंग, दैट मेक्स द होल डिफरेंस टू द फाइनल फूड. एग्जैक्टली. उसका कितना पोर्शन, हाउ टू डू, जो भी है, उसकी टेक्निक्स डिफरेंट है, उसकी सीजनिंग डिफरेंट है, उसका टेस्ट, बैलेंसिंग ऑफ जो 6 टेस्ट है इंडिया में, जो 6 टेस्ट पे थ्योरी है कंप्लीट कुजीन की, उसकी बैलेंस करना जो है वो हर कुजीन में डिफरेंट है.
तो वो चीजें आप जो नुआंसेस हैं वो उस कुजीन में रह के ही सीख सकते हैं आप। तभी आपको साउथ का बेस्ट शेफ साउथ इंडियन ही मिलेगा। काम जानता है डिफरेंट थिंग, रेप्लिकेट करने में और वो अलग चीज ओरिजिनलिटी है। में there is a रेप्लिकेट करना difference और of ओरिजिनलिटी में authenticity। बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो तब से फिर मैंने इंडियन फूड में, और इंसिडेंटली मैं बड़ा लकी था कि मैंने आईटीसी को ज्वाइन किया ओबराई को छोड़ने के बाद, वट एवर रीजंस में भी इट वाज वेरी हैप्पी सिचुएशन, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। बट आईटीसी ज्वाइन करने से आईटीसी फ्रॉम डे वन इज ऑन इंडियन फूड, द फोकस ऑन इंडियन फूड। इट्स नॉट के आईटीसी हम लोग वेस्टर्न फूड या ओरिएंटल फूड में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम इंडियन फूड में बहुत अच्छे हैं। इंडियन फूड में आईटीसी का कोई मुकाबला नहीं है। और जो रिसर्च और जो वहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी मिली करने की, कंसल्टेंट्स को हायर करके, जो ट्रेडिशनल शेफ्स को हायर करके, या लेडीज को हायर करके, जो बहुत अच्छे अपने खाने की जिनको समझ है कल्चरली, वो लोग भी हम लोग के पास एज ए कंसल्टेंट काम करते थे, उनसे सीखते थे। तो इनपुट्स जो थे आईटीसी में इंडियन फूड के ऊपर बहुत कमाल के थे। इसीलिए आज भी इंडियन फूड आईटीसी का नंबर वन। और एक टाइम था कि अभी भी है कि बाकी सभी होटल कंपनी दे थिंक कि इंडियन फूड में अगर हमें चाहिए तो हम आईटीसी का आदमी ले लेंगे, हमें ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। They don't have the Because that is an institution itself for Indian institution by itself, Indian food. तो मेरा वहाँ रहने के कारण I am totally then converted into, when my total interest भी इंडियन फूड में, इंडियन फूड की ही अंडरस्टैंडिंग में, फिर वो रेस्टोरेंट्स अच्छे मिले ऑपरेट करने के लिए, बुखारा, दम वगैरह कॉन्सेप्टलाइजेशन सारी मैं पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर किया, तो उससे डेवलपमेंट उतनी हो कितनी हो गई। एंड आई फील प्राउड a person like me, I am linked with the Indian food. If I link with Italian food, people will laugh on me, ना? You know, any other cuisine से मैं अगर लिंक करता हूँ अपने आप को, तो उसमें प्राइड क्या है? You can never become number one in any international cuisine. because You'll be your always origin number is two. in India. Your origin is India. Your culture is Indian. Exactly. You can do the other food. That's it. I'm not saying कि शेफ्स को दूसरा फूड ट्राई नहीं करना चाहिए, उससे रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहिए। पर मैं ये अब समझता हूँ, जो मैं बाकी सब लोगों को बताता भी हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ, कि तुम जिस कुजीन से बिलोंग करते हो, अगर तुम्हारी कुजीन मान लो तुम पंजाब के हो या तुम मान लो बिहार के हो, यू मस्ट मास्टर योर ट्रेडिशनल कुजीन। यू शुड बी सोल्यूशन फॉर दैट। उसके बाद उस कुजीन को तुम करो ना करो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल कुजीन करो, पर ये कुजीन तुम्हें हेल्प करेगी वो कुजीन भी और अच्छा करने के लिए। तो रूडिमेंट्स ऑफ फूड टेक्निक्स आप समझेंगे अपने कुजीन से, लेकिन आप दूसरी कुजीन को भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम अपनी कुजीन में परफेक्ट कर दो, उसमें अगर मास्टरी हासिल कर ली, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। बिकॉज वही तुम्हारा कटिंग एज है। कल को हम 4 आदमी इकट्ठे खड़े होते हैं तो अपनी अपनी रीजनल कुजीन जो है उसके अंदर हम डिफरेंट है। आप मेरा नहीं बना सकते, मैं आपका नहीं बना सकता, वो चीज, यही तो डिफरेंस है। एक कॉमन तीसरी चीज तुम दोनों बना लेंगे, आपकी वैसी होगी, मेरी वैसी होगी, विल फॉलो सम रेसिपी, विल डू इट। वो तो एक रेप्लिकेशन हो गई, ऑथेंटिसिटी नहीं। वो दैट ट्रेडिशनली नहीं, एथनिक नहीं है वो। सो 1977 में कॉर्नेल ने आपको वो अंडरस्टैंडिंग दे दी। बिल्कुल, वो गाइडेंस दे दी that where should you focus। हालांकि it was too early, but right, I knew, or somebody advised me also, it will help me throughout my life. and it helped eventually। It helped, yeah, it definitely आईटीसी और जो आपने इंडिया को जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखा, मतलब ये तो एविडेंट है। अब मैं थोड़ा बहुत जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत जो मैं कोशिश भी करता हूँ करने की, इंडियन फूड में तो कर सकता हूँ, इंडियन और किस कुजीन में कर सकता हूँ सर। आपका जो नहीं सर, आपका जो योगदान है इस इंडस्ट्री में, आपने आईटीसी को, इंडियन होटल्स को, जो आपने बुखारा, दमपुख्त, इसके जो गेस्ट रहे हैं, वो अपने आप में इस बात की टेस्टिमनी है दैट वी आर ऑल एट राइट पाथ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। कि जो नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स आई जस्ट गॉट, आई एम लकी, एन अपॉर्चुनिटी आई गॉट कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली ऐसे रेस्टोरेंट्स को बनाने की, फिर उनको मैनेज करने की, तो आई डिड माई बेस्ट। बाकी अपॉर्चुनिटी तो बाकी, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आई हैव डिफरेंट थॉट। आई बिलीव द इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज बिगर देन ए मैन, बिगर देन मी।
I am because of that. Not that those restaurants are because of me. No, I'm not. For me, those restaurants are bigger, and I got the opportunity to manage them. I think I'm lucky, and I did my best, whatever I could do that time. जब बुखारा या दम पुख्त का जब कंसेप्चुलाइजेशन हो रहा था तो वो कैसे मतलब वो दिन थे हाउ डिड यू मैनेज टू ब्रिंग दैट थॉट इनटू एग्जिस्टेंस No, it's very interesting. You see, cuisine को कोई भी thought को जिस तरह हमें thought मिला, लॉन्ग स्टोरी हो जाती है, थॉट मिला एक बड़े सीनियर रिप्यूटेड एजुकेटेड पर्सन से, and he was one of the governor of his state that time. So he gave the thought along with the chairman, Mr. Aksar, that you should do some dampuk style food. Now, what thought मिलने से you people then as a technical people or in your own field, you understand the food, then you have to work on that thought. You have to study the thought. You have to study, you have to go to in that era which you want to do it. So it takes 3-4 years to do anything. अब दमपूत को भी रियली दमपूत खोलने में हमें 4-5 साल लगे थे, क्योंकि दमपूत को अगर शॉर्ट में बताऊं ऐसे ही कि दमपूत फूड इज, सभी ये कहते हैं कि सब कुछ पतीले में डाल वाल दो, फिर दम कर दो और कुक कर दो. हाउ टू डू अला कार्ट? अगर सब ऐसे ही पका देना है तो अला कार्ट कैसे करेंगे? So it means that you get into the system by understanding the food in totality and the real structure of the food and the technicalities, techniques, taste, flavors, उन सब चीज़ों को जब आप स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप मान लो एक दमपूत चीज़ आपने बनाई, आपने उसको डिसमेंटल कर दिया, आपने एक मशीन को एक मॉडल उसको डिसमेंटल किया. नाउ देयर स्पेयर पार्ट्स आर लाइंग विद यू, डिफरेंट पार्ट्स में थिंग्स आर लाइंग यू. नाउ अकॉर्डिंग टू अला कार्ट हाउ यू पुट देम, assemble them again and make the final dish to get the same similar flavor, close flavor to a real food cooked in the dum way. So it takes time. वो तो बड़ी पुरानी बात है. अभी रॉयल वेगा जो रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला हमने जी, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि मेरे को बीइंग ए वेजिटेरियन आई वाज रियली felt very lucky that I got that opportunity to do it. एग्जैक्टली उसको हमें बीइंग ए वेजिटेरियन हमें 3 साल लगे उस वेजिटेरियन को कॉन्सेप्ट करने में, जो कि 2012-13 में खुला था चेन्नई में, और हमको 2-3 साल लगे हुए पूरे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को एक कॉन्सेप्ट करके डिशेस को क्रिएट करके उसमें देने के लिए. एंड इतना ज्यादा मतलब बीइंग वेजिटेरियन इवन हमको तभी समझ आई कि वेजिटेरियन फूड में कितने इंपॉर्टेंट रोल है स्पाइसेस का. और फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड होटल्स के अंदर स्पाइसेस की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. आपने सुना होगा जो फ्रॉम द होटल स्कूल कि वेजिटेबल्स की, मीट्स की स्पेसिफिकेशंस होती हैं. लैम है इतने किलो का, कार्कस होगा इतनी की स्पेसिफिकेशन, फिश की भी, हर एक चीज की स्पेसिफिकेशन. स्पाइसेस की कोई नहीं है, आज भी नहीं है. बट रॉयल वेगा रेस्टोरेंट के स्पाइसेस की स्पेसिफिकेशंस है. अगर कार्डिमम है तो उस कैप्सूल का साइज क्या है, सीड्स कैसे कॉम्पैक्ट होंगे, क्लोव है तो उसका अगर बल्ब ऊपर नहीं है तो क्लोव एक्सेप्ट नहीं होगा रेस्टोरेंट के अंदर, बिकॉज देयर इज एवरी स्पाइस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेजिटेरियन फूड. बिकॉज वेजिटेरियन फूड में इतना मार्जिन नहीं होता है ऑफ कुकिंग जितना मीट्स वगैरह में होता है. भूनते रहो, करते रहो, लॉन्गर टाइम ऑफ कुकिंग है. वेजिटेबल्स में इतना नहीं होता है. Either they cook best or they get spoiled. Either of the two happens. Either of the two happens. So everything play a very, very important role. So the first time we made specification of spices, very detailed. That's one example I'm saying. And what happened, then we realized is the spices which we are buying in the hotels, if we are buying for 1,000 rupees a kilo, when we ask for those specifications, they become 2,500 rupees a kilo. Because they say with these specifications, this quality cannot come into this price. But we bought it to keep that quality. That's why, and a realization happened, which was, we found that everybody, the industry knows, the most difficult in the hotel industry, as a commercial industry, catering industry,
to satisfy, make happy vegetarian people. They are most unhappy people. So to make them happy, you have to understand the lot of factors. From their point of view, what do they? You in Royal Vega restaurant, all the chefs who are working, all the cooks who are working, they have never cooked or tasted the meats. They are the people who picked up from vegetarian smaller places, then they were trained to take up or to work into a 5-star hotel, but they cannot stand meat. That's the aura you have to create for vegetarian food. Then only you make vegetarian people happy. Food gives you the aura. Food gives you the, sometimes because in food that everybody talk also, that it reflects the feelings of the chef or the cook who cooks the food. The way it has been presented, the feeling comes. इमोशनल कनेक्ट इमोशनल कनेक्शन होता है उसके अंदर, तो वो एक ऑरा क्रिएट होता है. इज फूड स्मेल्स डिफरेंट, फूड टेस्ट डिफरेंट. तो ये नहीं है कि एनी नॉन वेज कुक कैन कुक वेजिटेरियन फूड आल्सो. Oh, it's very different. That's why in Royal Vega we don't say pure vegetarian. Working on vegetarian food, realize that nothing called pure vegetarian. It has no meaning. Food has to be honestly vegetarian. It has to be ethical. Pure means what? Means nothing. So that's the seriousness about food. That's when you eat concept, even in Dampukta Bukhara, when we worked on this, you work in very fine details. वो ये नहीं होता है रेसिपी है बना दी हो गया. रेसिपी इज नॉट ए कुकिंग. रेसिपी ऐसी एक गाइडलाइन है, एक स्टैंडर्ड. रेसिपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. When you write the recipe for a particular restaurant, for a particular cuisine, or that service style, or that service design, then that recipe has importance for that particular place, that particular outlet and restaurant. ये नहीं कि सेम रेसिपी उठा के कहीं भी यूज कर लोगे तो इस्तेमाल हो जाएगी. नो, उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, कभी वैल्यू भी नहीं मिलेगी, वो सूट भी नहीं करेगी. हो सकता है वो इनकरेक्ट हो, उसके लिए वो फिट नहीं होती. तो रेसिपी इज ओनली ए गाइडलाइन. रेसिपी never produce a good results of cookery in general way. A good cookery can create a good recipe. A recipe cannot create a good food. सर ऐसा क्यों है कि जो हम अपनी बात करते हैं, हम जो इंडियंस हैं, हम अपने खाने में प्राइड क्यों नहीं ले पाते, जबकि इसलिए ले पाते हैं, हमारे एजुकेशन नहीं है. You also did the hotel school, I also did, and we have done with a good 3-year it's happening. Where is the books to read? Where do you teach Indian food? Other than few recipes you show in the practical cookery. Practical, but where is the theory? The understanding of any subject, and you start thinking about that particular subject only through the books, theory books and theory classes, not practical. It's all West and French that we have seen. You do even to do a practical class of Indian cookery, but when you go for theory class, you read French or the Western books now. With the Indian cookery books. Indian cookery books are only recipe books. But with it as a subject, theory, as a science, where it is. Why we don't have that? And it is the job of the institutions to do it. It's the job of the universities to do it. It's a combination. Cookery is a culture. It's a traditional, it's a culture of the identification. You are identified with your food in between the cultures. So it is the job, not only the chef. The problem is here now, everything is left on the starting chef. point. Starting point. It's a people have to sit in the room and discuss as the historians, anthropologists, people who know the languages, to read the old manuscripts and translate them. You need a food scientist to understand that science into a modern science and how to write it now. And you need a chef who can create that food into today's world. And then you do the book so that today's culinary enthusiast or culinary student
can read, understand, and think about food. Where it is. This is the need of an hour. This is the need of an hour. We are late already. There is no education in the colleges. दुनिया भर में hotel management college कर रहे हैं, but nobody is teaching the right thing. I think this is very beautifully explained by you, because somebody who is into the industry for more than the 50 years now, आपकी तरफ से जब ये बातें आती है, then I feel कि जो industry अभी काम कर रही है और जो young जो generation है, जो आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको थॉट प्रोसेस कैसे सेट करना, उनको एक गाइडलाइंस मिलेंगी. देखो चीजें ये फैशन को भी सोच करने के लिए बड़ी सिंपल सी चीजें और हमें पता है ये. And we are doing in these schools also little or bit, because you see every young people get excited with the fashion. But what is happening now, if we don't say fashion, what is happening in the present, you get fascinated with that and you start. Absolutely. But the thing is, to do the present thing, you have to understand the basics. Like you cannot train somebody to make a career or something. One lucky can be guy, that's it, but cannot be that's the example. You cannot train somebody only to the pop singing. If you want to teach somebody singing or music, you have to teach ragas. Right. You teach ragas, they will play ragas, they will sing ragas maybe for 10, 15, 20 years. Then he becomes creative, he can sing whatever he wants. So that they are their basic right. Basics right. Now, even if we come on culinary, everybody is busy in doing some gimmicks, some molecular, there are all kind of things, and even the colleges are saying, okay, this is the new way, we must teach our students. No need to teach students this. If Fran Andrea, the chef, who is the father of molecular gastronomy from Spain, started, when he started molecular, he was 52-year old. He didn't start at the age of 17 or 18 in the college. You imagine the person who is 50-year old, how much strong basic, how much strong foundation he has on the food, on his traditional food and all that. Then he became creative. He thought of something, he took the help of the scientists, this, that, turned those food into the different way, came into the fashion, taken to the world, became the world famous. It's a different thing. But it didn't start in the college of 1890, who came out from the college, and in the college we are teaching now molecular gastronomy and all that. And I'm saying this, even like in our time, much later didn't, maybe in the 80s, the nouvelle cuisine came from the France. Yeah, nouvelle cuisine. The Paul Bocuse, who started the nouvelle cuisine, he was also plus 50 when he started that. He learned, he went to Japan, traveled here, there, picked up ideas or whatever it is. But he was plus 50, 52, 53. Then you do be creative, do what you want to do. But not you start from the college and teach only this. They will never learn the basics, the rudiments, techniques, the food, the knowledge. Their mind will not work. And we must learn. You see, I happen to travel also more than about 60 countries with my own work, and with my company gave me a lot of opportunities to travel abroad and learning the foods and doing the food demonstration, very large events and all that. I was very lucky, I will say that. I went to Italy, I give this example to many people. In the Alma Mater is a very famous Italian school in the Parma region. I went there, I talked to the students about Indian food and this and that, whatever, just as a piece of information. I told the dean of the college that, why don't we have an exchange program with the Indians and they're coming. He said, no, Italian students will do internship learning only in Italy. We don't want them to spoil their food traditions. It is not our job to teach that food. Or they're exposed to other food and spoil their food. They must first learn this food, master this food. After that, they are free to travel anywhere. They do fusion, they do whatever they want to do, they do it. But not the basic training, we will not do it. So that's the sensitivity of the traditions and the food. And the chefs to create, to represent your culture.
and identity of the country. That will only increase your tourism. That will make the farmers more happy. Because lead to cascade effect is down the line to the farmers. Exactly. We, like in India, we are trying to, I'm not against the creativity can be, but why we have to teach these young students in the college to make olive naan? What do we want to promote, the farmers of Spain, Italy, or our farmers? So somebody has to really think very deeply these things. Things are happening. I'm not saying that nothing is moving. Some things But we are already late. but we are very late. But okay, whenever the things start and things happen, okay, late, whatever it is, but things will change. You will see it will change. Many associations and forums these days we happen to see around ourselves. So you feel, are they making any difference to the industry, or you feel that they should come under one roof and operate? What would be more impactful? You see, the thing is that many organizations, you see, everybody makes organization for different mind thinking. Some are made to make money and to as a business. There's a lot of organization, a lot of awards, a lot of every day there's something happening in the industry. More the merrier. I'm not saying that, but all are there. Ultimate objective is to make money for the organization. That's a business. I don't know how much they are to the industry, or they really want to upbring the people and all that, and to do that. So there are very few organizations, or maybe you can count them maybe, who are 100% dedicated and committed to the profession to bring them up. Or, like all professional organizations are there. I'm not saying that the organizations, even who does to do the right thing, to bring for the profession, to bring up, to control the profession in a right way, so that professionalism remain there. There are organizations. We have a IMA, Indian Medical Association. It's not owned by anybody. It's not to make money. It's not they don't have the money. But money comes to spend in the profession. Exactly. There is a CA, Chartered Accountants. It's an organization to teach people, to certify people so that you can become a better accountants. This Indian Bar Council or association, whatever you have to only, unless they, as a professionally, they qualify their examination, and then you are entitled to do the. So there are professional organizations in all. There is a Bharat Sahitya Academy. They all organizations there. Some government funded, some not, whatever. But they are not making money. They are serving better. They are serving for the profession, to create better professionals. They do it. So same way in the hotels also, there has to be some organization. There should be some, like we chefs have. We have an Indian Federation of Culinary Association. We are struggling. But we all work voluntarily in that. We all we have covered a lot of journey now, and we have established ourselves. Indian Federation is a part of the world body of the world chefs. We know that how much we raising our Indian chefs bar to the international level, and understand that they come. We do a lot of exchange programs, and a lot of learning is happening. And they are very successful these days that we see around ourselves. Yeah, it is. So this is what the profession. So those kind of organizations we don't have much. With this conversation ahead, एक important जो work factor होता है किसी भी इंडस्ट्री में, होता है टीम वर्क का. क्योंकि आपने जो इतना बड़ा जो आपका लाइफ स्पैन है दैट यू हैव क्रिएटेड एंड ऑल, आपके साथ काफी टीम्स ने अपराइज भी करा है, तो टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और एक लीडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने टीम मेंबर्स को अलाइन करके रिजल्ट दे पाना. देखो, लीडर किचन में whatever technology comes, still you have to do a lot of things with your hands and with your mind. You have to work that. That brings the difference from one restaurant to other restaurant, or one dish to the other dish. And in the hotel, in the kitchen, we have seen that even to prepare one dish is a teamwork. It's a different department's work to make one plate.
So vegetables come from somewhere else, meats come from somewhere else, then some guys grilling or frying, the gravy is made by somebody else, and the rice come from somebody, some other expert. It's not the one man is doing everything. So to prepare anything, there's a teamwork. And every individual person in the team has to put his best. It is not that you are handling with the nuts and bolts. You are handling with the natural ingredients. And cooking to right degree is very, very important. So the quality production is very important. Everybody has to do their best. So for that, it's very important for the leader to keep them into a good humor, to keep them happy, so that they are always motivated to do their best. And when they leave, also go home, they should go with a lot of happiness. So you have to create happiness. There is no, in the kitchen, there is no question of anger. Now, anger doesn't mean, or no shoutings, it doesn't mean that you don't care for the discipline. Discipline has to be of a very high order. It's a food safety issue. You have to follow the guidelines. You have to follow everything. Your uniform has to be perfect. You have to have a headgear. You know that Grooming it's and a grooming. It's a discipline. Exactly. It's a discipline. Now, but there is no need to shout or abuse in the kitchens to create the bad atmosphere. You have to keep people happy. You have to be part of the people. Every good chef, how big you are, how big your position, or how much money you get, or how big infrastructure or the people you have under you, you have to be part of them. If they are boys, if you have to take out the time to even, cut some vegetables along with them when they are cutting on the table, the boys, you also be part of them. Whether you do 5 minutes or you do it with them, stand with them. That time they'll talk to you. You will talk to them. You will understand them better. And in the kitchen, it's very, very important to understand each and every one. Because in the kitchen, whatever you do, people all come from different backgrounds with different education level. There are some people, you find one odd guys who are very less, maybe just metric. There are some postgraduates also. There are some hotel school also. There are some foreign trained also. All kind of people are there. You cannot have one style of management for everybody. You have to understand each individual. You have to speak the same language, what they like to understand. If somebody needs a very straight language, तो उसको ये भाई क्या कर रहा है तो उसको यही समझ आता है. Speak like that to him, but in a polite way, in a nice way. Don't speak English with him. Keep English. He will not understand half the things. It will affect your result. So teamwork and leadership is very, very important in the kitchen. Very important. And sometimes in the kitchen, whatever it is now, these days air-conditioned kitchens are there, very comfortable. I don't agree now, people say a lot of hard work. There is no hard work. But there is work, responsible work. Now, if you say responsible work as a hard work, I think it's a wrong term. You have a responsibility. Oh, responsibility needs, yes, your focus, your mind has to be there. It's not that you keep thinking something else in the world and keep working in the kitchen, it won't work. It will be you have to be there. It's like meditation. You have to be concentration has to be there. So that you call all these things as a hard work, I don't know. I don't call it a hard work. These things only create passion in you. These things only take you to the future and the visionary it made you. It's not a hard work. So when you are doing all those things, so you get the good results. So you have to create that kind of a feeling, that kind of a, motivation to the people. And that is only possible if you you be on the floor, find out the time, be with them, understand them. And in the kitchens, we have seen that, and I'm still there. Kitchen people expect everything. Our chef will do it for us. So you should, if your staff needs a loan, it's your responsibility to get him the loan. You go to the HR office, you get his application approved, not he leaves the work and standing outside the HR office outside. Motivate him to work, not
doing his own works here and there because you were not doing his work. It's your responsibility. If you do the things like this, people work for you. They have to work for you. They will take their quality. You cannot be 24 hours over there. So you enjoy the glory. So you must work for it. That's a very deep thought and a deep lesson that you have shared with us. And I also feel that my mentors have been very kind to me when they used to do something for me when I was in the industry. Yeah, it has to be. You can relate with this. Absolutely, absolutely, sir. Absolutely. In some cases, we find the people. That's why then only you find that the more turnover of the staff. You see, I don't believe it. No doubt on surface it looks that people leave the job for money. But money is, if you see the all data or surveys, money is always third and fourth thing. First is the atmosphere where they work. If people, particularly in the kitchen, if they feel happy and they feel that they are learning every day something also, they will never leave you. They only leave, then come back and tell you that I am going there because I am getting more salary. But why they got the thought to leave? Because the way they were treated. When you thought to leave, then you start in the market, you spread the word, and people start approaching you, then they tell you we'll pay you this much of money or whatever. Why you got this? Give the opportunity for people to go out, think to leave, and then they go out to find a job. So kitchen is a very different kind of a management which and is through the world. People will still leave, but you have to work like that only. So that you don't get that much of turnover. People like to work with you. People approach from other hotels. They like to work here. I know, understand. I know I have friends. They tell me about this or whatever. That kind of atmosphere you like to have in your kitchen. So बात करते हैं 1982 की. 1982 में दूरदर्शन चैनल पर आपने आकर जो हर घर में एक प्रोग्राम के थ्रू अपनी स्किल्स, वो रेसिपीज वो हर घर में शेयर करी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था सर? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. When I was, see, I had the habit, from my, if some work is given to me, I will take it as a challenge. If I don't know even anything about that, I'll work on that. I will learn, I'll work, and then I'll do it. And that way I've done a lot of other works also like that. So there's not much time to give example. But the Doordarshan, when it was told to me, so I said, yes, I will do it. And then it was the mini meals of the different regions, different states. So I didn't know so many things, so many recipes. So it means I have to find out, I have to research, I have to go to and meet the people. So even I made a format to do the research, like the research is done these days also. So I've distributed those formats to many, many people that what your name, which region you belong, and then what your community and what you eat in mini meals and all that. But I got 80-90% replies that we eat omelette and toast and fried egg, those kind of things. So nobody, either people, actually when I found that, then I have to meet people, different families, and to bring them to my level of thinking, what I'm trying to find out. I'm not finding out from what you eat every day in your table, but what you traditionally you eat, what you eat in your back home, or what you eat in your states, or what some guests come to your house, or if there is a wedding that people come 2-3 days before, what do you serve them and all. So it took a lot of time for people. A lot of research work. A lot of work with the people, talking to people on research work. So it takes time. Many people think even they think, oh, this is our routine thing we make every day. It's not, and they have 5-star hotel. Chef is asking me, तो ये तो पसंद ही नहीं आया, तो उसके बारे में बात ही नहीं करते. So you have to really exactly वो point जो आपने पहले बोला था, we are not confident about food. So we have to dig that out from the people. And it was a very interesting exercise, and when I did it, I'm very happy to did that. Every episode was having the different mini meals of different states, and that I learned a lot from that. That was my initial days. I never heard about poha that time. I come to know poha only that time when I was doing Madhya Pradesh. I didn't know. Like this only you learn the food slowly with this. So everything in your life contributed to your learning. Absolutely. Everything. See, food
See, food is the only thing which you worry and you spend money every 2 hours. There is nothing in this world where you spend money so often or so quickly. Even house rent also you give once a month and you feel nobody can throw you out from the house. You can't eat once a month and then you say 1 month I did not eat. Anything, in clothing, whatever material, whatever in life you use is not every 2 hours. It's the food which you have to think, you have to plan, you have to only decide or you have to order that after 2 lunch, 10 o'clock, 12 o'clock, 12:30, what I have to eat, I have to do food. So food is such a subject. It's so easy that I tell people to even research. You can do that food research even with a nuclear engineer. He also eats. Exactly. He also belongs to some community. He also eats in the house. He is also grandmother or parents or village. Have some food, traditions. But if I have to do a research on nuclear energy, so I have to only find an engineer to do that. For food, you don't need. Food, you talk to anybody. It is everyday affair. It is everyday affair. You are sitting in a train, the person next to you, you should be smart enough to start topic of food with that. The person will tell you 20 things. And whatever you listen, it adds up to your knowledge. And food is so easy to research. इतने सालों की जर्नी में एक बात मैं सर जैसे जानना चाहूंगा कि कभी किचन्स में आपके साथ कोई ऐसी चीज जो मतलब किचन डिजास्टर हुआ हो या मतलब थिंग डिडंट वेंट राइट कुछ ऐसा एंड देन हाउ डिड यू मैनेज बहुत होता है. You had sometimes a very embarrassing situation. I was doing some cookery demonstration in Srifort, some ladies club or something, long time back. It must be, I don't know, whatever, 95, 96 maybe. So one lady approached me. She said, it's the 2000, year of 2000. They said we are celebrating the 2000 in our school. School was in Ghaziabad. And she said, we have a concept in the 2000, like to have a cake and with a large duck, a big duck, and then 3 ducklings behind that. So it's become 2000. It's like 2 and then small 3 ducks. 3 ducks. So 2000, that's the cake we'll make. So I got, with the excitement, I said, we'll make a 3-dimensional cake. We will not make a line cake. So we'll make a grass ground and then we'll make 3-dimensional ducks and all that. Now I accepted that and I told them, I said, Ghaziabad you take and it's very warm and hot, you have to. So they did everything with the van. They put thermocol inside, they put heavy air conditioning in that or whatever, they did everything. And my chef, I told him everything that I went by travel, I went out, some other work. And I came back the same day and I came to check the cake just an hour or 2 hours before. Maruti van was outside. And that guy just made the straight cake and with the piping, the 3 ducks away. It was really embarrassing. I could not do anything. And the cake went like that only. And that day, till date, I could not have guts to talk to that lady. So embarrassing positions happen sometimes, but it's a great learning. Now after that, I never let it happen like this. If I have given the instructions, I will check 10 times whether it's happening in the way I wanted, the way I thought or not. It has to so be you have to spend a lot of time. Then you have to see now somebody say, oh, this is a very lot of hard work, your family life will also suffer. It's your commitment. It's for everything. Any other profession, if you have a commitment with the profession, these hurdles will be there. But then you balance them. I think the chefs are best to do a very good balancing act with the family and the work. Balance it. So balancing situations happen. But that doesn't become your standard. Exactly. Sometimes, that also happens that you're very unhappy with the food you made. But it's not acceptable. But there is no time you serve also. And the customer says, this is the best food I ever had. Now, it doesn't mean that becomes your standard now.
then उसे चल जाता है यार, चला दे तो यही चाहिए, ऐसे ही बनाओ यार, ठीक है. No, it cannot. You have to be internally yourself happy that you did the right thing, and this is the way you want it. You have to analyze yourself, not the customer. Customer should not tell you it is bad, or if he said good, you are hired for that, you are paid for that. He paid you the money. So there is no great achievement if you made the good food. That's your job to do it. But customer should not tell you it is bad. So you have to satisfy yourself. Sir, apart from 5-star hotel foods and the culture of 5 stars, मन करता होगा कभी बाहर जाने का, जो मतलब फेमस फूड जॉइंट्स हैं जो अपने लिए जाने जाते हैं, जैसे कोई भी फूड एग्जांपल होता है, तो आपके लिए वो क्या प्रेफर्ड फूड होता है, कंफर्टिंग जोन आपके लिए जहां आप जाना प्रेफर तो मेरा कंफर्ट फूड जो मेरे लिए है वो है वेजिटेरियन फूड और लोकल फूड जी. If I go to Chennai, I will not look for more paneer makhani. I will go for local, idlis, vadas, or South food, whatever. Love to eat traditional way and all that. And if I say that I love to eat pastas, but not here. If I eat pasta, then I need Italian wine also with that. I need the food in a right way. So wherever I am, I will love to have the local food. So I will say, okay, live in Gurgaon, Delhi, this NCRT, is the Radhesham Agarwal on bhaturas. I think they're the best bhaturas. In Paharganj. And they are different than the other one, right? The Sitaram. Because it's a different bhatura. So both I like very much. And I don't eat from everywhere, and I'm very particular about the fat they use and all those things. Maybe it's tasty, but if I don't think is the right fat, I don't eat. Then the vegetarian food, which I love, very regularly I go, is the Royal restaurant in opposite to the market, what's called the Crot place. Okay. Yeah, so Kakeda Dhaba and all that is few after Kakeda Dhaba, Shankar Market. Shankar Market. There's a Royal. It's a vegetarian. I love that food. Very nice. I do that. So otherwise, different states I like to be in Indore. Love to have food in Indore, street food. Amritsar definitely. Chappan Dukan and all in Indore. Amritsar I have a lot of joints which I really like to go there and eat. But I like to, that's one another thing, it might be not, some people might not believe it or not. If I go to Amritsar, I don't take bottled water. I take water whatever I given. But the water is so good. And you are able to digest that food or to feel good. Digestion is not a problem. Feel good only if you don't take bottled water. You take the local water, whatever is given. That I think people, ये जो लोग देख करके जाएंगे अब अमृतसर वो नहीं लेंगे. They will watch for the local water, of course. Thank you very much, sir, for your time. Oh, my pleasure. And thank you for your eye-opening visions and the lessons from your life. And we are very fortunate that कि हम आपके साथ time मिला. And thank you very much, sir. So, thank you very much, Rishabh, and it's a pleasure talking to you. My pleasure, sir. My pleasure.